Good morning, children. How are you all? Welcome back to SST class. Today we are going to study the new lesson in the earliest cities. In the previous chapter, we studied about that by the Chalcolithic age, Neolithic age, and Paleolithic age. That man was started leading a settled life and had already got engaged in cultivation and domestication of animals. Today, in this chapter, we will focus on today in this lesson, this chapter, we will focus on the Indus Valley civilization and Harappan civilization. Harappa is located in the Montgomery district, Punjab, the present day in Pakistan. It was first excavated by the Dayaram Sanghi in 1921 and 22. More than 4,500 years ago, people in northwest India on the banks of river on the bank of river Indus lived in large cities and knew how to write. These people were urban and civilized. Their civilization is called Indus Valley civilization or Harappan civilization. More than 4,500 years अधिक साल पहले सिंधु नदी के तट पर उत्तर पश्चिम भारत में लोह बेड़ा शहर में रहते थे। ये लोहों को लिखना जानता था। ये लोहों ने इस जगह को इंडस वैली और सिंधु वैली कहा जाता था और इंडस सिविलाइजेशन एंड हारप्पन सिविलाइजेशन कहा जाता था। More than 4,500 years ago. Till the second decade of 20th century, nothing was known about the Harappan civilization, and historians believed that Indian history was only about 3,500 years old. Means up to the second decade, 20th century, historians believed that Indian history was only about 3,500 years old. 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक हारप्पन सभ्यता के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था और हिस्टोरियन मतलब इतिहासकारों का मानना था कि भारतीय इतिहास केवल लगभग 3,500 वर्ष पुराना था। In 1921, Dayaram Sanghi, an Indian archaeologist, found seals at Harappa in a small village of Punjab, now present-day Pakistan. In 1922, Rakhal Das Banerjee, an officer of the Archaeological Survey of India, discovered the ruins of Mohenjo-daro by the clues given by the Buddhist monk. 1921 discovered the Harappan, and 1922 Archaeologists Survey India discovered the ruins of Mohenjo-daro, discovered by the person of Rakhal Das Banerjee. Sir John Marshall, Director General of the Archaeological Survey of India, made the formal announcement of the discovery of Harappan culture. सर जॉन मार्शल ने हड़प्पन संस्कृति की खोज की औपचारिक घोषणा दी. The Sir John Marshall, Director General of the Archaeological Survey of India, made the formal announcement of the discovery of Harappan culture. Harappan culture के बारे में सर जॉन मार्शल ने औपचारिक घोषणा दी. Excavation done during the 1920s led to the discovery of Harappa. It is one of the old cities in Indian subcontinent.
1920 के दशक के दौरान किए गए उल्खन ने हड़प्पा की खोज की, जो भारतीय उपमहाद्वीप सबसे पुराना शहरों में से एक था। हड़प्पा, it is located in the Harappa is located in the Montgomery district of Punjab in Pakistan. It was first excavated by Dairam Sanghi in 1921. The city is believed to have existed 4,700 years ago. Since 1920, many cities similar to Harappa, like Mohenjo-daro, now present day Pakistan. ये सिटी ऐसा माना जाता है कि 4,700 years पहले स्थित था। In 1920, many cities similar Harappa, like Mohenjo-daro, present day Pakistan, Lothal near the Gulf of Khambat, and Dholavira on Khadir Baitin run of Kutch, state of Gujarat, and Kalibangan, Rajasthan have been discovered. As the structure of these cities greatly resemble those found Harappa and set uniquely identical objects were discovered in each them. They are called Harappan city. ये शहरों की हड़प्पा में पाए जाने वाले लोहों से बहुत मिलती जुलती है और उनमें से प्रत्येक में विशिष्ट समान वस्तुओं का एक समूह खोज किया गया है, इसलिए उन्हें हड़प्पन शहर कहा जाता है। Uniquely identical objects discovered each of them, they are called Harappan cities. Next we are going to study the Harappan cities. Harappan cities were well planned and reflect the advanced town planning knowledge of the people. Harappan town अच्छी तरह से योजनाबद्ध से और लोगों की उन्नत नगर नियोजन ज्ञान को प्रतिबिंबित करते थे। The cities were divided into the west and was built on the high level, but it was smaller than the lower town, which was located to the east. The citadel, built on mud brick platform, consisted of important buildings such as granaries, public and religious building, and assembly halls. ये सिटी को एक गाद और एक निचले शहर में विभाजित किया गया है। इस सिटाडल वेस्ट में स्थित था और इसे उच्च स्तर पर बनाया गया था, लेकिन एक निचले शहर जो छोटे था, जो पूर्व में रहता था। Citadel means citadel. It was the raised part of the city and looked like a fort. Citadel looked like a fort like structure built on a raised ground. एक किला जैसा दांचा जमीन पर बना है, इसको हम कहता है citadel. It was perhaps the administrative block inhabited by the ruling class, the priests and wealthy merchants. The citadel was surrounded by high walls which protect from the recurring floods of Indus River. The raised part of the city is surrounded by halls for the protection. सुरक्षा के लिए दीवारों पर धीरे शहर का एक बड़ा किया है। Harappan cities, okay, a fort like structure built on raised ground, इसको कहता है citadel, मतलब एक किला जैसा दांजा जमीन पर बना है, इसको कहता है citadel. It was the first raised fort of the city and looked like a fort. The citadel, built on mud bricks platform, consists of important buildings such as granaries. इस citadel मिट्टी की ईंट के मंच पर बना गथ, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों जैसे कि
अन्न भंडार, सार्वजनिक और धार्मिक इमारतों और असेंबली हॉल भी शामिल है. An example of an important structure built on the citadel is the Great Bath of Mohenjo-daro. गद पर निर्मित एक महत्वपूर्ण का एक एग्जाम्पल है मोहनजोदारो का महान स्नान. ग्रेट बाथ मीन्स महान स्नान. द रूम वॉज सराउंडेड बाय इन ऑल sides. It was surrounded by rooms on all sides. Room was surrounded by the all sides. The bath itself was a large rectangular tank with stairways in northern and southern ends. Its bricks wall coated to plaster and layered with natural tar to make them watertight. स्नान अपने उत्तरी और दक्षिणी छोर पर सीढ़ी के साथ एक बड़ा आयताकार टैंक था. ये इस प्रकार बनाया गया है, ईंट की दीवारों के प्लास्टर के साथ लेपित किया गया था और उन्हें वाटरटाइट बनाने के लिए प्राकृतिक टार के साथ टाइट किया गया. द टैंक हैव बीन यूज्ड बाय इम्पोर्टेंट पीपल ऑन द स्पेशल ओकेशन. टैंक एक कुएं से लाया गया पानी से भरा है सकता है और उपयोग के बाद खाली कर दिया जाता है. The tank might have it filled with water pot well as emptied after use. The tank may be used to important people on the special occasions. इस टैंक का यूसेज महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा विशेष अवसरों पर किया जा सकता है. The lower town was divided into rectangular sections which were formed by the wide roads that cut each other at right angles. निचले सिटी को रेक्टेंगुलर शेप में डिवाइड किया गया है जो छोटी सड़कों द्वारा बनाई गई थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी. The common people their houses either side of these roads using materials such as bricks, gypsum and mortar. साधारण लोग ने ब्रिक, जिप्सम एंड मोटर जैसी सामग्रियों को उपयोग करके इन सड़कों को दोनों साइड में से घर बनाए. The houses were one of two stories. Stores I hand the several rooms built around a courtyard. मकान ऐसे बनाया एक या दो मंजिल ऊंचे थे और एक आंगन के चारों ओर कई कमरे बने थे. The rooms had several windows and doors. Some of these houses even had wells. एक का यह कमरा हवादार थे क्योंकि उनके पास कई विंडोज और डोर थे. Some of the houses even had wells means कुछ घरों में कुआं भी थे. The citadel and lower town had walls backed bricks around them. These walls were strong as they were built by laying and bricks in the interlocking pattern. The bricks themselves were strong and of such high quality that they have lasted for 1,000 years. गत और निचले शहर में चारों ओर पके हुए ईंटों की दीवारें थी. ये दीवारों मजबूत थी क्योंकि इन्हें ईंटों को इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखकर बनाया गया था. ईंटों स्वयं मजबूत और इतनी उच्च गुणवत्ता की थी कि हजारों वर्ष तक रहने के लिए इस प्रकार बनाया गया है. The Harappan cities also had efficient drainage system. Harappan cities also had efficient drainage systems. The system of the Harappan cities was one of the best in ancient times. Drains were constructed on either side of the roads. Harappan city में भी जल निकासी की कुशल व्यवस्था थी. यहाँ एवरी हाउस सारा घर में एक नाली थी जो
गली में एक सामान्य नाली से जुड़ी थी जिससे एक जटिल जल निकासी व्यवस्था बनती थी. The drains were laid to straight lines, had gentle slopes of the were covered with stone slabs. The drains had inspection bolts, holes at regular intervals, making it possible to clean them. नालियों को सीढ़ी रखा गया था. नालियों को एक सीधी लाइन से रखा हुआ है. स्लाइट had the trains were laid to straight line, एक सीधा सीढ़ी को रखा गया है. कोमल ढलान और स्टोन के स्लैब से ढांके हुए थे. इन नालियों में नियमित अंतराल पर निरीक्षण छेद थे जिससे उन्हें साफ करना संभव हो गया. These trains had inspection holes at regular intervals, making it possible to clean them. Although most Harappan cities were divided into a citadel and lower town, Dholavira was an inspection. ज़्यादातर एक गंध और निचले सिटी में विभाजित थे, लेकिन ये धौलावीरा एक अपवाद स्थल था. Dholavira is the part of Gujarat in India. It is divided into three parts: citadel, middle town, and lower town. The citadel, each portion was separated by stone walls. The entrance to each portion was in the form of gateway. The reservoir was used to store rain water. प्रत्येक बाग को पत्थर की दीवारों से अलग किया गया था. प्रत्येक बाग का प्रवेश प्रत्येक रूम में से बनाया गया है. इस इम्पोर्टेंट जलाशय का उपयोग वर्ष के पानी को संग्रहित करने के लिए किया जाता था. The reservoirs was used to store rain water. Dholavira also had a large open area where public ceremonies might have been held. धौलावीरा में एक बड़ा खुला क्षेत्र था. यहाँ सार्वजनिक समारोह आयोजित किया जा सकता है. Public ceremonies might have been held here. Dholavira has had a large open area where public ceremony also might have been here. Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had also elaborate storehouse. Mohenjo-daro means in Sindhi language mound of dirt, and Harappa means foot of Shiva. तो सिंधी लैंग्वेज में मोहनजोदारो को ये कहता है माउंट ऑफ डट, मतलब मृतकों का टीला, और फुड ऑफ शिवा द मीन्स ऑफ हारप्पा मीन्स ऑफ फुड ऑफ शिवा, शिव का भोजन. And Mohenjo-daro, Harappa and Lothal also had elaborate storehouse known as granaries. मोहनजोदारो and Harappa and Lothal में अन्य भंडार के रूप में जाने वाला भंडार गृह भी था जिनका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था. ग्रैनरीज मीन्स ए बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, मतलब अनाज कहाँ जमा होता है, इस जगह को अपन कहते हैं ग्रैनरीज. Next means Kalibangan and Lothal. Kalibangan, it is a new part of Rajasthan in India. Lothal is a part of Gujarat in India. Next हम पढ़ेंगे मोहनजोदारो, another major Indus site. It is located in the Larkana district of Pakistan, Sindh province. It was discovered Lakla Das Banerjee in 1922. Okay, Lothal, it is a Lothal and Kalibangan. Lothal is a part of Gujarat. It was an important part of located near Arabian Sea. Kalibangan and Lothal, we find fire altars which may have been used to performing sacrifices. Kalibangan and Lothal में इस अग्नि देवी पाता है जिनका उपयोग ऐसा होता है कि
यत्न याहू करने के लिए किया जाता होगा. At Lothal, archaeologists have come across the piece of stone, have made beds, tools for bed making, and finished gates of workshop. This indicates that was an important center of that craft at Lothal. Archaeologists have also discovered huge water tank which may have been used as a dockyard. Ship as boat entered through the sea and river channel and loaded and unloaded their goods at the dockyard. आर्कोलॉजिस्ट ने लोगों ने एक कार्यशाला में पत्थर के टुकड़े, आगे बने हुए मोती, मन के बनाने के लिए उपकरण और तैयार मोती भी मिल चुकी है. हम ऐसा इंगित करता है कि ये कला और शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र था. लोथल में आर्कोस ने एक विशाल पानी की टैंक की भी खोज की है जिसे शायद एक डॉकयार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. डॉकयार्ड मीन्स ए प्लेस वेयर शिप्स आर रिपेयर्ड एंड बिल्ट, मतलब जहाँ जहाज़ों को रिपेयर करने वाला अपने जगह को अपन कहते निर्माण करने के लिए जगह को अपन कहते हैं डॉकयार्ड. Dear students, your first video is completed.